Awesome. Great. So Sanket, all good to go? Yes, we are all good to go. Perfect. Great. So thank you. Thank you once again for taking out your time on Saturday morning. And this is our third episode, the Partner Success Spotlight. And as you all know, here we cover up the use case studies which our sales team have worked with the partners like you and have got the success. This entire session is to discuss about those critical use cases, and the first two session, which was probably a grand success, we have got the immense great response and love from all of you, and this motivates us to get into the third episode. People have really appreciated the kind of content which our team is giving up, which is in plain simple vanilla English, I would say, more on use cases rather than talking about a technical jargon. So great. Thank you all partners for your continued support. As we have discussed, the main objective over here is that while we meet customers today, they are not talking about products, they are not talking about solutions. They are concerned that whether you understand their pain area, whether you understand their core use case or the business outcome which they want to achieve, and the partners who are understanding the outcome which customer wants to achieve are getting the huge success. And this entire effort over here is to work towards that process. So in first and second episode, I'll just recap for the new people who have joined in. In first episode, we have covered up Atera. I'm sure most of you now know what Atera is. It's a agentic AI tool. It's the ITSM solutions like what Manage Engine or Metadata is, and it provides the all functionality, including the asset management, inventory management, patch management, remote access, ticketing. But the beauty lies into its agentic AI. And in the first episode, Sanket has covered up that how he has gone to a manufacturing organization who had a concern related to the Windows, Linux, Mac server operating system as well as the third party patch management system, and how he has provided the holistic solution and helped customer increase their productivity and save more than 40% time. That's what he has achieved over here. I think he's also getting the repeat order over here for more technician, if I'm not wrong. So that's episode one on Atera. Suchita covered up on Sophos Central, again orchestration layer, where while she went to a cooperative bank, I think 72 branches, right, Suchita? Yes, So yes. 72 branches, how she has given a single pane of glass solution from Sophos Central, not Yes. acting that firewall as a standalone device. So how that orchestration has helped, how she has provided not only the firewall but helped customer on the outcome achieve the incident response plan when any ransomware attack may happen. So she has helped in that regards. The third story, OpenText Cybersecurity, which we covered up on an endpoint backup, which is critical in today's time. The data which lies into our desktop, laptop, which are critical. Sanket has covered up that how he has provided a unique solution where OpenText Cybersecurity, which stores the data into AWS cloud over here. Sorry, Azure cloud, right? Sanket, sorry, Yes. endpoint is on Azure Yes, it and is. M365 is on AWS. Absolutely. But both Yes. resides in India. And Yes. OpenText Cybersecurity as a company who not only provide the license, but they take the ownership of a license plus storage. And I think the MSP price of 3,400 or 3,600, he has provided the unlimited storage of all these endpoint and saved a lot of cost for this customer. These were the these three use case of episode one. Episode two, again on Atera, as I discussed, a customer who wanted a single solution instead of a silos. He has covered up that particular point on Atera.
Again, he has put in across that the solution carries a unique licensing where it is not on number of asset, but it is a unlimited asset which that platform covers up. So the overall ROI goes pretty high for a MSP or the partners like you who can manage unlimited customer, unlimited asset with the same license cost. So it's a per technician license cost of 1 point, I think he has mentioned over here. But yes, we'll Sophos. So Suchita has covered up on episode 2 about the MDR. Sophos has acquired a company which is the legacy 1998 Secure Works has started. I think one of the oldest company on cyber security services, and Suchita has covered up that how the MDR of Sophos has helped customers while they are into a regulatory firm. So a beautiful solution and services story, irrespective customer is having a Sophos security solutions or not. This secure works portfolio is compatible across the product line, whether customer has Fortinet, Palo Alto, SentinelOne, CrowdStrike, Trend Micro, 350 connectors are there. SecureWorks is independent of the Sophos solution portfolio, more into the services side. A managed SOC is what they have provided. Last story of episode 2 before we get into episode 3, where Harish is waiting that when his turn will come. Probably, yes. So, Yes, episode yes. 2, the last story which Sanket has covered up is into a M365. Again, very critical because while we say M365, a beautiful solution on the email platform, but the standard plan does not include retention. After 30 days, the data which accidentally or intentionally has been deleted, customers can't recover that data. So M365 backup is now compliance. It is a necessity for everyone. So Sanket has covered up how customer has backed up not only his email, but including OneDrive, SharePoint, and Teams and all the applications. It is hosted on AWS, unlimited storage, unlimited retention. So this 6 area we have covered up. The recording is available on YouTube. If you want a recording, you may also put that into a chat box, and Nitesh will be happy to share the episode 1 and 2 recording. You can share that with your sales team as well, where we have covered up each session, approx 12 to 15 minutes, what we are going to do, the 3 story today. Perfect. So, Harish, Sanket, Suchita, first of all, welcome. Thank Thanks you, Pratik bhai. for Thank you and good morning, again everyone. taking out time to design this entire format. Harish, you first, the most senior guy, right? So yes, senior by probably age, not hair, because hair I'm having a more gray hair. Enterprise storage, Harish. So possibly yes, what you are going to cover up today. Yes, Pratik bhai. Thank you very much, and good morning to all. मैं एक Good morning. इंट्रोडक्शन देता हूँ ब्रीफ मेरा. आई एम हरीश शेंडगे. आईटीसीजी के साथ में ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग फ्रॉम 10 years. तो हमने 4 लोगों से स्टार्ट किया था पुणे पुणे ब्रांच, एंड नाउ इट्स 90+. Wow. तो पूरा जर्नी देखा है मैंने आईटीसीजी Upgraded का. from Narayanpet to Baner now in हाँ, Pune. यस यस. इन नारायणपेट टू बानेर. Yeah, yeah. यस, नाउ इट्स गोइमा सिक्योरटेक. टीम वही है, वही कंप्लीटली. जो आपको आपके साथ में जो भी बिजनेस दिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है. वही पैशन से हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली. और थैंक यू सबको पूरा ये जर्नी में सपोर्ट करने के लिए. Thanks. सो आई थिंक एपिसोड 3 है. तो आईटीसी जो और एक एक्सपर्टाइज डोमेन है, इट इज इनटू स्टोरेज. उस पे हमने डिस्कशन नहीं किया था प्रीवियसली 2 सेशन में. तो टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट द एंटरप्राइज स्टोरेज. Perfect. So तो what's there a use case जो हरीश भाई आप कवर कर रहे हैं आज? हाँ, यूज केस में ऐसा है, पीपल नो दैट पुणे इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब. तो जो Agree. कस्टमर का केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं,
इट इज उसका बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग का ही है पुणे में। ओके, तो अराउंड पुणे के आसपास वाले एरिया में उसके ब्रांचेस है, अराउंड 10 ब्रांचेस है उसमें, प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स वाले ऑफिस, ये सब सिनेरियो कस्टमर का पुणे के कस्टमर का है अभी के सिनेरियो में। परफेक्ट, तो हमने डिस्कशन में पेन पॉइंट उसने कस्टमर ने बताया कि एग्जैक्टली व्हाट आर दी एग्जैक्टली वो चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है रिलेटेड टू स्टोरेज एंड बैकअप। परफेक्ट। हमने डिस्कस किया तो उसका अभी का जो एग्जिस्टिंग सेटअप था वो टाइम पे, तो वो लीगेसी वे से उसका बैकअप कर रहा था। Because manufacturing many a time doesn't even go for a complete cloud. It is always a hybrid solution. So हाँ, बहुत सारे कि data, ऑन प्रीमाइस ही yes, agree. उसको सॉल्यूशन चाहिए है। तो वो बहुत Yes, सारे कंडीशन में वो बोलते हैं कि मेरा डेटा मेरे प्रीमाइसेस में ही चाहिए। तो ऐसे true. हमने जब कस्टमर से मीटिंग किया तो वो बोला कि ब्रांच में बहुत सारे इसमें वो उनके हिसाब से बैकअप कर रहे हैं, यानी कोई यूजर्स का ऐसे किसी मशीन को फाइल सर्वर बना के उस पर यूज कर रहा है, कोई नेट गियर का पुराने वाला NAS यूज कर रहा था एज ए स्टोरेज वाला डिवाइस, और उस पर डेटा बहुत स्कैटर था। अनदर था कि वो जो भी ब्रांच ऑफिसेस पे उसका मेजर जो यूजर्स का मशीन लैपटॉप रहेगा, मशीन रहेगा, उसका डेटा बैकअप करना बहुत सारा इंपॉर्टेंट था। तो एचओ Agree. ने सीटीओ ने क्या किया, आईटी मैनेजर ने ये किया था कि वो वीक में एक बार वो ब्रांच में बंदे को फिजिकल भेज के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में उसका डेटा का बैकअप कर रहा था। तो इसमें तो बहुत Okay. सारा है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन है, प्लस वो जाने का ट्रैवलिंग, प्लस वो डेटा का सिक्योरिटी नहीं, यानी एक्सटर्नल हार्ड जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क भी बढ़ते गए, तो उसमें तो कुछ नंबरिंग ये वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे पॉसिबल नहीं रहता है। तो उनका वो था कि नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव जैसे जैसे बढ़े, तो किस हार्ड ड्राइव में किस यूजर का डेटा है वो भी उनको पता नहीं था। कई बार लोग मेरे हिसाब से हरीश भाई बैकअप बैकअप कहते हैं, बट आई थिंक बैकअप से ज्यादा जरूरी तो अंडरस्टैंड करना होता है रिकवरी, राइट? बिकॉज बैकअप तो मैंने ले एग्जैक्टली, लिया, बट while the incident happens, वो रिकवर भी होगा कि नहीं is the critical outcome point, which possibly customer is more worried. Vis-a-vis we keep on talking backup, right? So yes, so I think very good point on that. Yes, एग्जैक्टली उसका वही प्रॉब्लम होता था जब भी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मशीन डाउन हो गया है, तो उसको अगर वो रिकवर करके देना है डेटा, तो एक तो उसका बहुत सारा टाइम है ना, कौन से हार्ड ड्राइव में डेटा है वो फाइंड आउट करने में जाता था क्योंकि कोई प्रोसेस ही सेट नहीं था। सेकेंड true. थिंग, सरप्राइजिंगली उसको जब वो एक्सटर्नल मिला भी हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा कि वो अगर डेटा रिकवर करने के लिए जा रहा था, तो लास्ट मोमेंट में उसको पता चलता था कि ये हार्ड ड्राइव ही करप्ट है। Hmm. तो पॉसिबल है ट्रैवलिंग में So the वहाँ। guarantee on recovery is not there. Yeah, absolutely. हाँ, वो रिकवरी And हंड्रेड I परसेंट think more concern area could be when any incident happens, because अगर ransomware incident होता है, that may also creates the issue on whatever is connected. Yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसको Okay. वो 100% फ्रूटफुल सॉल्यूशन था ही नहीं है, तो वो तो जब तक सब सही चल रहा है उसको कोई नहीं है, जब एक्चुअल में जरूरत लगेगा वो बैकअप का, तो वो टाइम पे वो मैक्सिमम टाइम पे फेल हो रहे थे। तो ये एक Perfect. आईटी वाले का मेजर पेन पॉइंट था। ऐसे ही डिस्कशन में नेक्स्ट टाइम हमने पूछा कि और क्या क्या आप अचीव करना चाहते हो इसमें, तो वो बोला कि मुझे ना सेंट्रली ये सब मैनेज होने चाहिए सिंगल पैन ऑफ ग्लास में। अभी तो मुझे कुछ विजिबिलिटी नहीं है ब्रांच ऑफिसेस में कौन सा डेटा है, एचओ में क्या डेटा है, और सेकंड थिंग है True. कि उसका रिडंडेंसी के लिए बैकअप वाला भी ऑप्शन कोई मेरे नहीं है। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं डिपेंडेंस हूँ बैकअप के लिए। तो वो Agree. रिडंडेंसी वाला भी उसका एक मेजर ये था कि वो भी मुझे अचीव करना है उसमें। I think some voice echo for rest of the people also the echo is coming, or how is it? Because I think Alok It's sir is आई गेस uh, it's सर not इको echoing. नहीं है। It's not echoing. okay. Okay, perfect. So Harish, over here, what I understood till now is that every branches, whatever was the endpoint and servers, that data the customer wanted to store into a file server. So यस, उसका था कि सेंट्रली मैं वो रखूं, और उसका कंसर्न भी था कि अगर ये सेंट्रल वाला बैठ जाए या ये सेंट्रल वाले को कुछ हो जाए तो हाउ टू रिकवर, तो उसको एक और जगह पे भी उसका हाँ कॉपी हाँ, चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। यस यस, ओके, यानी उसका मेन तो कंसर्न वो था कि अगर मेरा ब्रांच का ही पूरा जो भी मैंने सेटअप किया, इन्वेस्टमेंट किया, या वो अगर डाउन हो जाएगा तो वो डेटा मैं कहाँ से रिकवर कर पाऊंगा। तो परफेक्ट, वो सॉल्यूशन डिजाइन के लिए हमने अंडरस्टैंड किया कंप्लीटली उसका रिक्वायरमेंट, हमने पूछा ब्रांचेस में कितने कितने यूजर्स है,
वहाँ का बैंडविड्थ कितना है, एग्जिस्टिंग डेटा कितना है, फ्यूचर ग्रोथ यस, क्या आप कंसिडर कर रहे हो, और आपको अग्री, अचीव क्या करना है। वो सब परफेक्ट। हमने थरोली टेक्निकली डिस्कस किया सीटीओ के साथ में। तो हमने वी कम अप विद दी सॉल्यूशन, यानी उसको जो भी ब्रांच ऑफिस है, सेल्स ऑफिस छोटा ऑफिस है, तो वहाँ पे डेटा कम है, तो उसको हमने 4 बे वाला डिवाइस दिया, जहाँ पे अदर ब्रांच में प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे डेटा का साइज ज्यादा है, वहाँ पे हमने उसको 8 बे वाला डिवाइस दिया। और वो सब उसका एंड So पॉइंट। while you say 8 bay, 4 bay, the device can carry that much of hard disk and the हाँ, दैट space मच हार्ड डिस्क, यस as यस। per what their requirement is. आप 4 बे Yeah, में 4 हार्ड perfect, डिस्क लगा सकते हैं, और perfect. उसका Yeah, जो भी okay. डेटा है वो हिसाब से हमने हार्ड ड्राइव And का I think while साइजिंग। you size, just for my knowledge, for example, like here in Mumbai, we have 60 people. So it's like that whatever device I will put, अगर मैं उसको file server की तरह use करूंगा, तो हाँ, one of the sizing component will also be कि कितने लोग वहां पर एक साथ read write कर रहे हैं. That again could be a sizing component, यस right? यस It's यस, not just नंबर about storage. Yeah, नंबर okay, ऑफ यूजर्स भी इंपॉर्टेंट है साइजिंग में, यस। perfect. Yeah, agree. और दूसरा वो उसका एक तो ये ब्रांच वाला हमने साइजिंग कर लिया। सेकंड उसका ये रिक्वायरमेंट था कि ब्रांच का भी मुझे डेटा का रेप्लिकेशन चाहिए। तो हमने Hmm. उसको Okay. बोला कि आपका एचओ में हम एक बड़ा वाला डिवाइस दे देंगे, और नैश टू नैश रेप्लिकेशन जो क्विनैप के साथ ही इनबिल्ट बैकअप वाले यूटिलिटी आता है HBS3। So no software is required for a remote to head office or a data center नो replication. नो, उसके साथ इनबिल्ट आता है क्विनैप के साथ में, And उसमें भी हम। encrypted traffic. हाँ, यस यस, नैश Okay, टू नैश perfect, बैकअप उसके साथ में हम वो okay, वाला करेंगे ऐसे। तो perfect, उसका perfect, ब्रांच टू ब्रांच का बैकअप का भी उसका रेप्लिकेशन वहां पे एचओ में मिल जाएगा। तो ये सब perfect. डिस्कशन के बाद हमने उसको सॉल्यूशन ये डिजाइन करके दिया था। Great, awesome. तो उसका इसमें प्रॉब्लम क्या हो सॉल्व हो गया, ह्यूमन इंटरवेंशन बंद हो गया, यानी ब्रांच में जो भी यूजर का डेटा उसको बैकअप करना है, ऑटोमेटेड हमने शेड्यूल इन कर दिया कि ये टाइम पे ये यूजर का बैकअप होना चाहिए। या तो एज ए फाइल सर्वर आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली एंड यूजर वहां पे ही नैस में काम करेगा, तो वहां पे ही डेटा सेव हो जाएगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन का एक उसका मेजर पेन पॉइंट सॉल्व हो गया है। एक हरीश भाई अगर मैं पूछ सकूं तो मतलब मैंने वो फाइल सर्वर तो ले लिया बट एज वी हाँ, ऑल majorly work on cyber security, we know that nowadays the incident happens. Just for my knowledge, अगर ransomware attack आ गया तो ये QNAP का डेटा को भी हैम्पर करेगा ना? और do you have any mechanism to uh, यस यस यस, नहीं एग्जैक्टली सेम सेम क्वेश्चन कस्टमर ने भी पूछा था कि ऐसा कोई रैंसमवेयर जैसा अटैक अगर होता है, अननोन अटैक, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है इसमें, यानी वो डेटा वहां तो पे इनक्रिप्ट हो गया है मेरा, तो मैं वो टाइम पे कैसे क्या रिकवर कर पाऊंगा। उसके लिए क्यूनैप में ना इन एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में स्नैपशॉट फीचर आता है। okay, हाँ, तो इसमें क्या होता है, स्नैपशॉट में पॉइंट इन टाइम कॉपीज वो सेव कर लेता है, यानी फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर का अटैक फॉर एग्जांपल 11 बजे हुआ है आज, तो 10 बजे का जो भी जेन्युइन कॉपी अगर रहेगा स्नैपशॉट का, उससे हम वो वो पूरा। शेल के अंदर वो पूरा स्टोर करके रखता होगा और यस रिकवरी ओके ओके यस एंड यस, दैट इज वो नॉट स्नैप। टच्ड व्हेन वी आर रीड राइटिंग इट्स अ डिफरेंट शेल ऑल पुट हाँ, टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट रहता है, यस। उसके लिए ओके हम प्रोविजन भी करते हैं कि वो पूरा कंप्लीट डेटा साइज का 20% हम स्नैपशॉट के लिए रखेंगे, और वहां से परफेक्ट अगर डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है तो वहां से हम जेन्युइन वाला फाइल रिकवर कर सकते हैं। वो एक। वन मोर पॉइंट कि आपने मतलब जो ऑफिस था रिमोट ऑफिस उसका हाँ, डेटा तो हेड ऑफिस पे ले लिया सो आई यस, अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड 3-to-1 अप्रोच की दूसरे साइट पे मैंने ले लिया बट देन करेक्ट। अगेन इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर कि अगर मेरा वो क्यूनैप ही बैठ गया जो मैंने हाँ डेटा सेंटर या हेड ऑफिस में रखा है हाँ तो आप हाई अवेलेबिलिटी प्लान करते हो मतलब वो क्यूनैप बैठ गया तो क्या मतलब और आई एग्री रेड और वो सब हमने कॉन्फ़िगर किया होगा पर लेट्स हाँ। से हार्डवेयर ही वो क्रैश हो गया देन तो उसके लिए एचए का भी सोल्यूशन है। एचओ में उसको हमने वही प्रपोज किया था कि हम सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले 2 डिवाइसेस लगेंगे एचओ में। तो उसका ओके एक्टिव और पैसिव सेम डेटा, यानी अगर प्राइमरी अगर रेप्लिकेट फेल होगा हो जैसे जाता वो है, ओके ऑटोमेटिक सिंक रहता है वो, तो वो से पैसिव से हम उसका डेटा कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं। और ये सेंट्रल मैनेजर पे मैं सब डिवाइस एक साथ मैनेज कर सकता हूँ हाउ इज हाँ, इट उसका जो मेन और एक रिक्वायरमेंट था कि उसको सिंगल डैशबोर्ड में दिखना चाहिए सभी, तो क्यू सेंटर बोल ओके के एप्लीकेशन है क्यूनैप में।
वो भी बाय ओके, डिफॉल्ट फ्री ही आता है। तो उसके साथ में वो सिंगल कंसोल में कम्प्लीटली उसके ब्रांच प्लस एज वेल एज एचओ वाले सिंगल इसमें देख सकता है थ्रू क्यू सेट। perfect, awesome. So how was next? I mean, solution is perfect. I think it. हाँ, तो वो लेकिन पुणे वाले कस्टमर इतना आसानी से मानते नहीं है। हमने तो उनको बता दिया कि ये सब पॉसिबल है सर, ये सब आपके नहीं, मुंबई प्रॉब्लम वाले सॉल्व भी हो नहीं जाएंगे। मानते, ऐसा अकेला पुणे वाले का नहीं है। तो फिर वो बोले नहीं नहीं, आप तो बोल रहे हो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पीओसी देखना है इसका। तो मैं बोला ठीक है, हम डेमो का इन्वेंटरी भी कैरी करते हैं। तो एक एक ब्रांच ऑफिस पे एक डिवाइस लगाया और एचओ में एक डिवाइस लगाया, और जो भी प्रपोज सॉल्यूशन वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है वो हमने उसको लाइव में दिखा दिया। तो ये Perfect. सब टेक्निकली थ्रू हो गया, वो हैप्पी हो गया सीटीओ की। इट्स So you परफेक्ट have यानी demo मेरा। inventory as well as technical expertise to हाँ demonstrate यस everything. डेफिनेटली, यस टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है अपना। तो Okay, हमने वो उसको एज पर उसका रिक्वायरमेंट हमने उसको शो कर दिया इन पीओसी। perfect. तो Awesome. उसने Awesome. टेक्निकली थ्रू किया था कि ये हम ये सॉल्यूशन के साथ में आगे जाएंगे। Okay, awesome. यस। Before you move ahead, Harish bhai, one question is that, see, honestly, matlab, nowadays hard disk and QNAP, even मतलब अगर आप 2 बाय 4 पे देखोगे तो अभी Amazon पे मिलना चालू हो गया है, राइट? It is basically more of a run rate which everybody needs. यस। यूनिक क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आज मतलब आप कुछ सर्विस देते हो, कल मेरा बैठ गया तो क्या मतलब, व्हाट इज अ यूनिक प्रपोजिशन विच यू एंड पार्टनर इज प्रपोजिंग इट टू द पार्टनर? कल मेरा क्यूनेप ही बैठ गया तो मतलब मेरा आरए में जो है वो कैसे होगा? क्यूनेप कमिट कर रहा है, आप सर्विस देते हो, क्या होता है हाँ, बेसिकली? अंडर वारंटी आरएमए का प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, यानी वो मिनिमम 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम लगता है। इसमें हमने क्या ओके, किया, एज ए वैल्यू एडिशन और एक नॉमिनल चार्जेस पे ऑलमोस्ट जो भी बिल ऑफ मटेरियल है उसका अराउंड एक 20-25% कॉस्ट पे हमने क्यूएम से एक सर्विस वाला कंपोनेंट निकाला है। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर कस्टमर का अगर डिवाइस अगर फेल हो गया है, तो इक्विवेलेंट या तो हायर एंड वाला डिवाइस हम एज उसको एज ए स्टैंड बाई प्रोवाइड करते हैं, यानी वो हम उसको ओके, विद इन 48 आवर्स में उसको डिवाइस दे देंगे। उसका हार्ड ड्राइव वो सेम सीक्वेंस में उसमें डाल दे देंगे, उसका रेड बिल होके उसका काम चालू हो जाएगा। उसके बाद में हम कस्टमर को आरएमए के लिए भी हेल्प कर देते हैं। आरएमए में वो QNAP so से so the भी standby कोऑर्डिनेशन। can be arranged by the team to यस, the partner. Okay, टू द perfect. पार्टनर That's कस्टमर। the value addition where you keep the inventory. So till यस, the time they don't get the uh, एक्चुअल repaired आरएमए। appliance or the actual new appliance from QNAP, you are making sure that their business doesn't get interrupted. Perfect. यस Awesome. यस यस। Great. Yes. So तो वो what's next? टेक्निकली So तो थ्रू हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो okay, हमारा मीटिंग था वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, तो मेरे लिए भी okay, लर्निंग था। तो हमारा सीएफओ के साथ में मीटिंग था। तो अभी okay. के सिचुएशन में आपको भी पता है बहुत सारा रैम का अवेलेबिलिटी का इशू, प्राइस का इशू, बहुत सारे चैलेंजेस है। उसने भी उसके पेन पॉइंट बताया, कमर्शियल रिलेटेड हमने भी उसको सब बताया कि ये सब चैलेंजेस है सर, प्राइस वैलिडिटी रखना पॉसिबल नहीं है, पे 2 बार प्राइस चेंज हो जाता है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक एक निगोशिएशन और शेयर मार्केट से ज्यादा आजकल हार्ड डिस्क के प्राइस वेरी होते हैं। शेयर मार्केट से भी बहुत खराब है। अभी का सिचुएशन तो। या तो उसको भी पता था, उसका भी डे टू डे एक्टिविटी का उन्होंने भी एग्री किया ये सब चैलेंजेस है, तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे हमने वो डील क्लोज कर लिया। तो लेकिन वो जैसे हम मिलने के लिए जाते हैं तो वो पर्सनली भी पर्सनल टच के साथ में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही डिस्कशन में हमने सीएफओ को डिस्कशन में पता चला, उन्होंने ही बोला कि उनको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है। वो ओ ओके, हाँ, तो वो वाइल्ड अब लाइफ स्टोरेज से फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी आ गए। हाँ हाँ, यस यस, ओके, पर्सनली डिस्कस किया तो उन्होंने सब बताना चालू किया, इंटरेस्ट एरिया वो ओके, सब। ओके, ओके। तो फिर वो बोले कि इतना यानी बिजी शेड्यूल में कैसे पॉसिबल है। वो बोलते हैं जैसे टाइम हम्म, मिलता है वीकेंड या तो छुट्टी लेके ओके, तो वो चले जाते हैं। यानी महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ताड़ोबा वगैरह वाइल्ड लाइफ, वहां पे यस। जाके वो उनका वो जो हॉबी है फोटो शूटिंग वाला वो करते थे। तो उन्होंने ही बताया डिस्कशन में कि वो ऑलमोस्ट जाते हैं तो दिन के 1000-1500 फोटो खींचते हैं।
तो एज ए स्टोरेज बिकॉज कंसल्टेंट, वेरिएशन आते हैं ना उसके अंदर, यस, सो द हाँ, साइज इज लार्ज, या यस, तो एज ए स्टोरेज कंसल्टेंट मेरे दिमाग में आए तो ये स्टोर कहाँ करते रहेंगे, तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया, सर स्टोर कहाँ पे करते हो। तो वो भी पुराने यानी बहुत टाइम से कर रहे थे, उनका भी मैकेनिज्म था, वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में करते थे। वो कुछ क्लाउड वाला हाँ, स्टोरेज मिलता क्योंकि है। एडिट और वो सब करना है, हाँ, यस। तो वहां पे उन्होंने ये रखा था, जेन्युइन उनका जो भी था वो अच्छा वाला ही सॉल्यूशन यूज कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे क्लाउड में तो रिडंडेंसी मिलता है, जैसे प्रीवियस वाले केस में हमने जैसा डिस्कस किया कि हार्ड ड्राइव का कुछ अब यानी चालू है बंद है, जब तक लगाते नहीं है कुछ पता नहीं चलता है, हम्म। रिडंडेंसी वाला कंसेप्ट नहीं है हार्ड ड्राइव में। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर इसके लिए भी हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है, हम आपको एक 2 वे वाला NAS देते हैं, आप एज ए आप उसका मीडिया सर्वर फोटो आप स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, यानी जैसे गूगल फोटो, यानी हम फोन में खींचते हैं, अगर I हमारा use Google Photo, which it identify the face and AI हाँ, recognition. एग्जैक्टली ये भी क्यूनैप के भी क्यू मैजिक एक एप्लीकेशन है, वो भी AI बेस्ड एप्लीकेशन है, So उसमें वो सब। QMaggie is like Google Photo. यस, एग्जैक्टली, तो वहां पे Awesome. वो टाइम कौन से स्पेसिफिक पीरियड का उनको फोटो चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। कि वो ताड़वा और शेर लिखेंगे तो आ जाएगा, मतलब वो फोटो हाँ हाँ, QMaggie यस will. यस, Okay. वो कंप्लीटली उसमें आ जाएगा, या तो फेस रिकग्निशन करके ये पर्टिकुलर पर्सन का ही मुझे फोटो चाहिए, वो भी उसमें आ जाएंगे। या सेकेंडली, एलईडी और वो सब भी लगाया है, वो क्या, मतलब आई डोंट नो तो ऑन बात दिस। करते करते वो उन्होंने बताया कि उनका एक 4 BHK फ्लैट है पुणे में, तो ओके। डेफिनेटली वो चारों भी इसमें उन्होंने LED लगाए थे। और हमने जो उनको क्यूनैप दिया है वो एज ए वो मीडिया सर्वर भी यूज कर सकते हैं, यानी एक उसमें वो वीडियो स्टोर कर सकते हैं, एक They स्क्रीन। can play on LED from the QNAP क्यूनैप app. डायरेक्टली, यस, अगर उनको And all these are उनके, the mobile app available on my phone, right? Or हाँ, मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। awesome, awesome. विंड ये सब एंड्रॉयड और iOS दोनों को भी सपोर्ट करता है। तो पर्सनल टच कर लिया आपने सीएफओ यस को। यस यस, और ये इसके साथ में उन्होंने ये वाला भी ऑर्डर क्लोज किया है, और बहुत सारे रेफरल के थ्रू भी अभी भी उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेम उनके ही रेफरेंस। उनके फ्रेंड्स का भी 2 बे का भी ऑर्डर आएगा। यस यस यस, और सेम रेप्लिकेट जो प्रीवियस वाला जो मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर को दिया था ना, उसने सेम रेप्लिकेट उसके अदर महाराष्ट्र में भी अदर लोकेशन पे ब्रांचेस है सेम कंसेप्ट में, उन्होंने वहां पे भी वो सेम रेप्लिकेट किया है। उनको सॉल्यूशन एग्जैक्टली उनका एज पर रिक्वायरमेंट था, उनको उनको इंजीनियर को ट्रेन करने का भी रिवर फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी ब्लू प्रिंट लेके उन्होंने वहां पे रेप्लिकेट किया। तो कस्टमर ऑसम, भी ऑसम। हैप्पी था, पार्टनर भी हैप्पी, और हम भी एज यस, मेजरली तो हैप्पीनेस ये था कि उसका कस्टमर का पेन पॉइंट हमने सॉल्व करने में हेल्प किया। यस। ऑसम, नहीं, थैंक्स यस हरीश भाई, इट वाज fantastic solution. And I think, like you conveyed, QNAP is not just the storage device, but it provides the application like file server. Like a lot of people are asking queries, it has a lot of restriction on the file server on access files, transfers. It can become your private cloud. And like QMaggie or media server, QNAP has almost 100 plus applications यस across even many of the domain, including surveillance. They have a huge success story. So thank you, Harish bhai, it was wonderful. यस, Now थैंक यू। going back to possibly the Sanket, going back to the second one, yes, Sophos email security. Awesome, perfect. So Sanket, you are going to cover Suchita. Yes. Me, sir. Okay, Yes. awesome. Yes. Good afternoon, everyone. Thank you for Good joining us. afternoon. Yeah, so I think from good morning it has come to good It has afternoon. come to good afternoon. Suchita is saying, Harish, that you have taken more time. Yes. No, no, sir. Okay. Awesome. Great. Yes, So, sir, Suchita. Yes. this is a story of month back. We have closed something. तो मैं बस उसी को हाईलाइट करना चाहती हूँ. So एक कस्टमर था, बैंकिंग सेगमेंट का कस्टमर था. They were having 27 users across their different branches and head office and all. So head count was 2700 users. They were Okay. using all other cybersecurity solutions, and their email domain was on Microsoft O365. They were using a cloud exchange as an email domain. Okay. तो एक महीने पहले वहाँ पे एक फाइनेंस, बिकॉज बैंकिंग है तो फाइनेंस के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं.
Yes. So that finance person got a mail from their CFO that they need to transfer urgently 48,000 USD to someone. Okay. तो वो जो मेल आया तो the receiver was also the receiver's mail was looking like a genuine. Receiver को लगा कि ये तो हमारे direct CFO से ही mail आया. Everything was normal, and the finance guy has transferred the payment. 48,000 USD का payment चला गया, and that was the fraud they have assumed. मतलब पेमेंट ट्रांसफर हो गया, उसके बाद समझ में आया कि वो ये तो फॉल्स लिंक था जहां से हो गया अटैक हो गया, एंड देयर नेटवर्क वाज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो उस टाइम पे फिर देन कस्टमर हैज कॉल्ड द पार्टनर कि यस ऐसा हो गया है, वी वर आल्सो यूजिंग ऑल द साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस. इट वाज अ फिशिंग अटैक. या इट वाज अ फिशिंग अटैक. सो that was an email compromised attack जो समझ में ही नहीं आया because everything was looking like a genuine. Receiver's mail was genuine. Because nowadays even the hackers know that who all are the regular pattern of the people where they need to transfer and all. It's I think a lot of common issue which all customers are facing. Yes. Because now a time hackers doesn't use only spam or viruses mails. वो उतने से ही सीमित नहीं रहते. They are also now they are using AI to generate the emails. They are also using AI new is smart technologies enough to generate unhackable phishing attacks. Yes. Yes. So कस्टमर का पहला क्वेश्चन था कि मेरा तो ईमेल डोमेन आई एम यूजिंग क्लाउड ईमेल डोमेन, तो मेरे तो सारे मेल प्रोटेक्टेड ही है. M365 है, I am protected. Yes. Yes. तो उनका कंसर्न था कि ये हुआ कैसे. So then we have come up with this solution कि सर ये जो हुआ था that was not only for the email domain का कोई प्रॉब्लम नहीं था. Microsoft O365 is a good email domain, but it is not adding a layer of security to the emails because अभी जैसे हमने बात किया है, standard doesn't come up with the ATP on the email platform, advanced threat protection. Yes, it's an add-on module. Yes. And आजकल जो भी अटैकर्स जैसे हमने बात किया, they are using QR code phishing, QR code phishing techniques यूज करते हैं, BEC यूज करते हैं, credential harvesting. So all are these techniques which attackers use. तो ये जो है इसके लिए एडिशनल एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगता है which Sophos is having in their email security product. You written time of click. What is time of click? Yes, so टाइम मतलब ये इंसिडेंट हुआ, उसके 2 वीक बाद एक और कस्टमर के वहां पे इंसिडेंट हुआ which is that was a time of click. मतलब जब मेल आता है यूजर के ईमेल्स में बॉक्स में, तब वो डोमेन से स्कैन होके आ जाता है, इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल, तो डोमेन उसको पास कर देता है. बट बिकॉज ये वीकेंड्स वगैरह में मेल जाते हैं जो नॉर्मली डोमेन पास कर देता है, बट यूजर्स उस टाइम पे क्लिक नहीं करते. यूजर्स जब मंडे ऑफिस आएंगे, सैटरडे संडे होगा तो पॉसिबली वो तो जो लिंक होगी वो मेरे email security bypass होके आ जाएगी because the malware is not okay. Malware was not there at the time of inboxing the mails. तो जब जैसे ही मंडे वो यूजर आके वो मेल चेक करते हैं, वो क्लिक करते हैं, तो वहां पे वो ऑलरेडी वो लिंक पे वायरसेस होते हैं. So that's a time of click technologies which Sophos email security already has. मतलब वो मेल इनबॉक्स में आ गया, उसके बाद भी वो जब क्लिक होगा तब भी स्कैन होगा. If it is any malicious thing is there, they will not allow to pass that mail. So even if it has been downloaded to my inbox, while I click on that link, if it is malicious, it will protect. Awesome. It will block. Yes. Okay. So that's a time of click technology which Sophos email security has. तो ऐसे ही हमने जो भी ईमेल सिक्योरिटी के फीचर्स थे वो हमने कस्टमर के साथ डिस्कस किए कि अपार्ट फ्रॉम योर सिक्योर्ड ईमेल डोमेन यू विल नीड द काइंड ऑफ एडिशनल लेयर सिक्योरिटी फॉर ईमेल सॉल्यूशंस फॉर ऑल द यूजर्स ऑफ ईमेल. और बिकॉज वो आरबीआई कस्टमर था तो उसको सारे कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं, लाइक आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है. राइट सबसे बड़ा वर्ड तो आपने ये डीपीडीपीए लिख दिया है. अभी सबसे ज्यादा कंसर्न तो everybody is talking DPDPA, right? So the deadline has also come to get this established. Yes. So in that मतलब उसमें बेसिक नीड ही ऐसा है कि उनका PII डेटा जो है should not go out. जो भी पर्सनल क्रेडेंशियल्स है वो नहीं जाने चाहिए. दैट इज ओनली द मैंडेटरी थिंग इन DPDP Act and RBI. And if I'm not wrong, it's not just related to email, I believe. Even my data which is there in OneDrive, SharePoint. So while we say email as a platform, then we are also concerned about the data which is there on other application.
right? Yes. So yes, okay. और आजकल Perfect. सारा कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल से ही होता है, तो True. ईमेल पे ही पर्सनल डेटा वगैरह सब शेयर होते हैं। तो सोफोस इज अलोंग विद दैट सोफोस ईमेल सिक्योरिटी, वो ईमेल सिक्योरिटी में हम लोग ईमेल डीएलपी प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज द वन सिनारियो जो हर कस्टमर को कंप्लायंस में फुलफिल होने में हेल्प करता है, बिकॉज सोफोस इज हैविंग अ डेडिकेटेड ईमेल डीएलपी सॉल्यूशन विद So ईमेल this इन is a separate product all put together, right? Sophos email no so security. email DLP is bundled in email security. But see, Sophos email is a separate product all put Yes, together. Sophos email Got it. security is a separate solution. Okay. Yeah. Nowadays, So people are also talking about DMARC and SPF. So all those are also covered up here in Sophos email SPF, security. DKIM, DMARC manager, everything is included in Sophos Is email. included. So they don't need to go for a separate DMARC manager. Okay. No. Perfect. If they are having email plus licenses, everything is included. I being ex Sophos Suchita was working Yeah. 2013, 14, long time ago. Yeah. Before even Sophos acquired CyberRoam. So Yeah. I have not seen all these features, such a comprehensive one. So is it like there since long time? I mean, it's a very comprehensive stuff. So Yes. Huh. So Sophos was having this solution many years ago, but recently before 5 years, जैसे आप मार्केट में अभी तक तो वही नाम सुनाई देते थे, प्रूफ पॉइंट एंड सिस्को आयरन पोर्ट एंड ऑल वेयर द Cisco Ironport was the leader on this segment. Yes. I mean, जब वो dedicated email security bank or large customer, Ironport was the leader those days. Yes, perfect. So before 5 years, one good person has joined the Sophos from Cisco Iron Port only. Okay. So he has So worked in Tom Cisco Focha. Iron Port. Okay. Tom Focha. He has worked in Okay. Cisco for 10 years and he was the face of Cisco Iron Port product. So he is now with Sophos He is now with since how Sophos. long? 5 years. Oh, okay. So he has built this entire platform from Yes. scratch again. Okay, Yes. fantastic. तो अभी जो 4 साल में जो email security में जो enhancement आए, that all thanks to this person, because he has taken the email security on a next level for Sophos. What customer was having idea कि Sophos के पास सिर्फ standard email solution है, but now adding with the AI technologies, with the all type of new threats they are coming on the email. The email security product with email DLP, he has enhanced the product way better than it was used 5 years back. Perfect. Every time you keep on saying Suchita, but yes, like you only said proof point, you only said Cisco Ironport, the solutions are available in market. They also provide the email security, ransomware protection or anti-phishing solution, possibly a few feature on the email DLP. But I mean, what's the game changer? Why this customer has chosen Sophos email security? Sir, as being into Sophos from so many years, now Sophos doesn't only stop on one product. मतलब वो लोग जब भी कोई सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके साथ एक प्रोडक्ट है जो बंडल करके देते हैं, दैट्स द गेम चेंजर फॉर अस एवरी टाइम. तो यहाँ पे भी द गेम चेंजर वाज Sophos email security has been bundled up with the phishing threats, because अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं, दे आर डिजाइन्ड फॉर एन डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज. बट आपको हम सबको पता है कि ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो ईमेल सिक्योरिटी अगर कस्टमर ने डिप्लॉय कर भी लिया, बट देन इफ ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक, तो ह्यूमन को ही ट्रेन करना इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एवरी कंपनी नीड्स टू डू. So that Absolutely, is where I think a very valid, and again I'm just putting that in bold because मैं जब 7 साल पहले ये चालू कर रहा था, while I was getting into more of an entrepreneur journey, मैंने वही सोचा कि अब कितने साल हो गए, इट्स ऑल अबाउट आई एम पुशिंग अप द NGFW, IDS, IPS, WEF, एंटी malware, whatever those technologies, सब defensive है by nature. So by nature, it is all about that we are talking that any attack will happen and I have the best technology to protect that particular stuff. So एक method जो है is all about that attack will come and I will protect it. But मैंने सोचा कि साइबर सिक्योरिटी में कोई प्रोएक्टिव क्यों नहीं सोच रहा है, एंड दैट इज वेयर द ह्यूमन कम्स इन, लाइक यू सेड, राइट? बिकॉज जैसे आपने पहले बताया, ये केस के अंदर भी फाइनेंस का बंदे ने ट्रांसफर कर दिया, he has not checked it was a spoofed email, right? If he would have checked
with the Yes. methodology. But वो finance का मतलब सीखेगा कैसे is the concern, right? कि उसको Yes. सिखाएगा कौन? He is not from a cyber security background. So ये fish threat नहीं, so solve यहाँ क्या करता है तो सुचिता? फिश थ्रेट विल सॉल्व द जैसा हमने बोला ह्यूमन एरर प्रॉब्लम, मतलब फिश थ्रेट इज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस टूल. दे विल गिव अ रेडी टेम्पलेट्स. उनके रेडी टेम्पलेट्स होते हैं जो एवरी कस्टमर रन्स इन देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट कि कौन वीक यूजर है, लाइक हु इज द यूजर हु इज नॉट getting identified the difference between spoof email and normal email. There is a तो cyber वो security simulate awareness करेंगे attack. So simulates now today. I think as a culture, while that simulation happens and they get trapped, वो बंदा और Yeah. cautious हो जाएगा. Okay, Yes. okay. And after that, जैसे ही weak user identify हुआ, Sophos fish threat solution will provide them an individual training कि आपने Perfect. ये ऐसे क्लिक किया था तो बहुत what you लंबा should ट्रेनिंग do. पूरे दिन का कि No, कैसे है? no, no. Because It's no. it's like some videos trainings है जो So quick जो video, the 2-3 minute videos yes, on that. Okay, awesome. yes, So it's more like that. It's a solution where yes, human is the weakest link for any yes, organization. yes, We are simulating the attack. We are yes, trapping those users. The user yes, risk score is getting defined, right? And yes, basis on that, we are also providing the proactive videos or the training to them. We are designing that course content. So वो बंदा धीरे 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 अपना cyber security knowledge improve कर रहा है, improve करता है, and yes, then that's how the company cyber immune is getting increased. I believe. yes, Perfect. because हर But ये customer को game changer कैसे हुआ? Because example, there are solutions in market, right? yes, Who also provide this, and I agree it's a compliance, right? But yes, there are solutions in market who yes, provide such kind of stuff. So phishing simulation and cyber awareness is again nothing new. There are yes, dedicated solution like Sophos fish thread is also a dedicated solution till now. yes. So game changer क्या है इसमें? गेम चेंजर ये है कि हम बिकॉज ये तो अलग अलग प्रोडक्ट है, बट नाउ if any customer is buying Sophos email security, we are giving them a phishing simulating tool as a free of cost with bundled with the email security. We are not charging them anything for a fish threat solution. We are giving them as a bundled with free of cost ओके, with तो Sophos लाइक यू email सेड security. एग्जांपल ईसी काउंसिल अवेयर 700-800 रुपया पर यूजर लेता है, या थ्रेड Yes, कॉप और गोल्ड फिश और मेनी अदर्स. और जो yes, यू आर सेइंग इफ कस्टमर इज बाइंग सोफोस ईमेल सिक्योरिटी, yes, the phishing simulation and cyber awareness, which is a dedicated product of Sophos Fish Threat, yes, is at no yes. cost. It's bundled Yes, over there yes. in We that will price. for giving them bundle with no cost. So phishing simulation fish threat product will be included in that email security purchase only. And Sophos still provide this as a dedicated solution Yes, separately as well, right? If yes, customer, okay, fantastic. But if they buy email, then this comes at no cost. Awesome. yes. Perfect. So after this, Great. all these solutions and the kind of features over email security having, we have closed that deal of 2,700 email boxes last month. So Awesome. that's how the partner has closed the largest deal of And I their. think for the partners, while we say QNAP applications, the 100 plus Yes, applications, as well as this Sophos email security and fish threat, we have deployed in our experience center, the Goyama yes, Experience Center. You all are most welcome, where we can plan it out the virtual session as well as the physical session, whatever is comfortable with you. We can demonstrate all this feature. So whatever Harish has discussed or Suchita has discussed, you feel those stuff into our experience center, how it works. We can also provide you or your customers a dedicated system you want to try it out or learn. Everything we can help you to grow your business. yes. And just Perfect. want Great. to Yeah. add Yeah. one thing that whenever the customer is using O365 or GCP, Sophos email get sync in with that 365 और GCP domain. सिर्फ It MX works at record होता है वो. API layer. Yes, वो सिर्फ There's MX no record Git Sophos से. routing need, right? It is all about that. I put my M365 or Google credential and boom, on, right? So it's Yes, but Sophos Central पे वो domain link कर देना and then MX records and all will get synced. So difficult earlier actually configuration. MX record has to get diverted. Here Yes, I think it works at the API layer. So pretty yes. easy. I just need to Easy put to. my Yes, domain and done. yes, yes. Perfect. Awesome. Yeah. I believe, I'm not sure, but our team
Pranjali has closed one more opportunity last week. Just would like to highlight before Sanket kicks in. Is all about that she has also provided Sophos email security from an angle that email has to be secured. But it was more of a pharma customer, I remember. And she has also provided email archival to them. Because while we talk about security, pharma also needs to keep that email for a very long time, right? So they have a compliance for, I believe, 7 or 10 years. They need to keep their email into a searchable format. So any litigation or anything happens, they need to provide that particular email copy. So I think Pranjali has beautifully bundled the Sophos email security with OpenText Cybersecurity email archival, and as a bundle solution, right? She has provided that, and she has, achieved the overall outcome of what that pharma customer was looking for. So fantastic. So we can bundle this out like what we covered up in first episode, I believe, related to M365 or Google. Yes, perfect. Yes, Sanket bhai, waiting for your turn. I can see some, the curiousness on your face. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Right, it's always amazing that we start in the morning and then we end in the afternoon. Yes. That's a great sign. And pretty good move by Sophos, Suchita. Right, I really appreciate Sophos thinking, the proactive way rather than just going at the reactive way. And then, it was great to see Harish Bhai on this call today. Right, it is always see him and then hear from him. All right, so moving on, I'm very quickly going to cover, a very interesting use case that we basically closed last quarter, right? Okay. So mainly on availability, right? Or I know Harish also spoke about NAS to NAS replication, right? During his use case scenario. This is going to be something similar, but a very, very different layer altogether. Okay. Now, when I talk about this specific customer, now, non-banking financial company, they are majorly dealing into UPI transactions. Right? Okay. So UPI being the majority or the most effective payment gateway or payment way that everyone uses right now. Okay, be that your GPay, your phone pay, या कुछ भी आप ले लो, right? So this is what these guys were into. Okay, एक दिन के they were processing more than 85,000 transactions. So think of it, right? अभी large volume, very large volume, like very large volume. And then again, they need to be spread across the entire country. Okay, तो फिर उनका जो पूरा setup था, that is needless to say pretty much hybrid. And then काफी सारे servers, databases on prem, काफी कुछ on cloud. So that was basically their setup. Now think of it, जब भी हम लोग UPI transactions की बात करते हैं, okay, so it works very instantly, right? मैंने QR code scan किया, right? Amount डाला, and then it is paid. But I'm sure सब लोगों ने ऐसा नोटिस किया रहेगा, बहुत बार होता है, not बहुत बार, लेकिन एक दो बार तो I'm sure सबके साथ हुआ रहेगा कि मैंने QR code scan किया, right? 500 रुपया is, for example, I want to pay it to someone. मैंने वो amount डाला, and then वो circle घूमता रहता है, right? घूमता रहता है. And then all of a sudden I get a message कि okay, हाँ भाई, your transaction did not go through. ठीक है, अगर आपका पैसा कटा है तो आपको वापस मिल जाएगा. Because UPI is at a different level right now. चाय वाला भी, I think it's the fastest growing in India, if I'm not wrong. आपने 500 बोला, आजकल लोग 5 रुपया करते हैं, तो वही, so right? I think everywhere it's a accepted way of doing the transaction. Yeah, absolutely, right? The pain point that this guy had, okay, is when things did not work. Okay, so like I said, ना कि UPI, if it doesn't go through, यूजर एक्सपीरियंस चेंज होता है ना, क्योंकि आज तो ऑटो वाला, वो चाय वाला, एवरीबॉडी यूज दिस, राइट? एग्जैक्टली, राइट. और फिर जैसे ही अगर ऐसा कुछ भी हो गया, राइट, क्योंकि हाँ मैंने
लेट्स एग्जांपल फोन पे से पे किया, आईसीआईसीआई बैंक से कनेक्टेड हूं, नहीं हुआ, ओके, तो लोग मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर सीधा डाल देंगे ट्विटर पे। और आजकल तो हरीश भाई ने बोला कि हार्ड डिस्क के भाव शेयर मार्केट से भी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, लोग शेयर मार्केट को भी ट्विटर से हिला देते हैं। हाँ, तो करेक्ट। तो एक ट्वीट डाल दिया, ओके, तो वो पूरे ब्रांड का इमेज डैमेज। Brand image is the key area. Yes, absolutely. एग्जैक्टली, राइट। वो What's this 5 lakh per minute outage? ग्रेट क्वेश्चन। सो अभी लाइक आई सेड ना कि ओके दे आर इनटू प्रोसेसिंग ऑल द यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अगर एन 85,000 मोर देन 85,000 इन अ डे, right? If मेरा server goes down, okay, or if my entire system goes down even for a minute, okay, तो जो transactions मुझे उसको लॉक करना रहता है, right? Because this is non-financial banking sector, right? RBI also comes into the picture. They have a mandate कि you need to log every single transaction, right? True. So इमेज तो मेरा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, राइट। उसके बाद आरबीआई का कंप्लायंस भी आएगा, जहां पे वो लोग मुझे फाइन मारेंगे, ऑलराइट। प्लस आई विल बी लूजिंग और आई वुड हैव लॉस्ट ऑल द लॉग्स। तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ओके हाँ भाई So I मुझे think real-time replication and the data availability is pretty एग्जैक्टली important for them. Yeah. एग्जैक्टली एंड दैट्स वेयर ये 5 lakhs पर मिनट का जो उनका डाउन टाइम कॉस्ट है, दैट कम्स इनटू द पिक्चर। it would be more than 5 lakhs, okay, if Yeah. RBI comes in, तो फिर वो लग गई, right? But anyways, Yeah. the point is, that's basically their pain point. True. अभी बात किया, उन लोगों से बात कर रहे हैं, and then needless to say they had a DR solution already in place, okay, but then they are stuck, right? The point was कि वो ट्रेडिशनल DR सिस्टम था, ओके, वो स्केड्यूल्ड स्नैपशॉट लेता रहता है, ओके। अगर एक टाइम के बाद मान लीजिए कि मेरा स्नैपशॉट नहीं गया, then I'm lost, then I lost my data. When we talk The about RTO and RPO is critical. That exactly, what's the gap between the exactly, failure and my data is available. Yeah, absolutely. exactly, right. So when we talk about replication, RTO and RPO are the most important thing. The higher this number, the higher downtime you get. The Absolutely. lower this number, the better it is. Right? So this is where they were struggling, right? True. अभी another struggle was because like I said ना कि okay यहाँ पे RBI का भी compliance आता है, and then when we talk about compliances, these guys they need to keep on executing their DR drills because Yeah, उसका I भी was report about बनता to है। ask because the way in larger building the fire drills happens, the way we Exactly. are talking about this phishing drills, Mhm. for any company, DR drills is mandatory. They have to perform the DR drills, right? So even Absolutely. stock market performed the DR drills on Saturday, test it out on periodic level, no, not every month, but yes, DR Absolutely. drills, and तभी I think IT team ऊपर नीचे रहती है कि DR on होगा कि नहीं। हाँ, DR on होगा कि नहीं, right? True. And then जो उनका traditional solution था, if they really wanna execute a DR drill, then they have to shut down the entire network, right? They needed to shut down their servers, which also is a very big headache. Okay, so they just could not plan their DR drills. DR drill ही plan नहीं कर पाए, तो फिर result is going to be के risk क्या है वही नहीं पता है, right? Recovery time क्या है वो भी नहीं पता है. So anyways, all those basically follow. Now other solution or not solution, but then जैसे जैसे इनसे बात करते गए, तो फिर बाद में ये भी पता चला कि इन लोगों का तो प्लेटफॉर्म का भी काफी सारा फ्रिक्शन है। They wanted to replicate what is or a server which is on prem, all right, to a cloud, okay, or more of a VM, right? VM के अंदर भी VMware के issues बाद में they also raise their cost, renewal cost and everything. Because VMware pricing, I think again a huge increase has happened in last couple of years. So Correct. so इसमें कैसा है? If I have example VMware at my DC, in traditional solution I should have VMware at my DR. So is it like compulsory with this replication solution or what? No, this is like any to any, and then that was in fact one of my game changer. Oh, Right? okay. So, right. So
कैसा रहता है in this specific scenario, that was their issue. Okay, they want to replicate something which is on-prem to a cloud, okay, or maybe to a virtual machine. They were just not able to do it. Okay. So I can have VMware on my DC. I can have open source on my DR. Absolutely. You replicate that. आराम से. Okay. आराम से. Right. Awesome. So, I have physical and Nutanix. That's also fine. That is also fine. As Cloud, long as physical. So platform is not a dependency over here. no, Okay. not at all. As long as you have the same OS, you are fine. Okay. Awesome. Then उसके बाद does not matter, right? कि मेरा hardware क्या है, okay, right? और मैं कहाँ पे उसको DCDR कर रहा हूँ. None of that matters. And then, like I said, ना कि okay, that was so Sanket, अगर ये केस में just I mean I'm sorry I'm interrupting. That's It's okay. like that. ये availability I understand it's replication which is real time by मतलब what you are doing. But मुझे अगर इसको migration में use case में convert करना है तो example a partner is getting a customer who are having a example 200 workload on physical they wanted to migrate cloud or cloud to possibly Nutanix or physical. So ये migration में भी मैं ये tool तो use कर सकता हूँ because example I want to shift from VMware to Hyper-V. With tool help me to migrate? Absolutely, it will. All right. Because think of it, migration is one-time availability. Right? That's how we treat it. That's the nice one. Migration is a one-time availability. So first time the overall migration happens. Yeah. Okay. In fact, we resolved one of the use cases taking migration as well. Right. So we had a hospital chain. Okay. A hospital chain, they need to be operative 24/7, no matter what. They wanted to upgrade their entire infrastructure and then they wanted to migrate to cloud. Okay. So we help them migrate to cloud. Awesome. Right? And no platform dependency. No platform dependency. No platform dependency. Awesome. So if I come back to the solution that we gave to this non-financial banking customer, okay, like I said, the solution that we have with OpenText, high availability, okay, it works at the byte level and it replicates every single byte. Okay. That's where you were saying no platform dependency because it's like it works at the byte level where the transfer happens. Awesome. Exactly. Perfect. Right. Plus, we also resolved their dry run wala issue. Okay. So they wanted to do drills. All right. I can execute drills with OpenText availability without taking my systems down. Honestly, so that is another feature that kind of comes into the picture. Plus, यहाँ पे fallback is basically into minutes. Right? You know, the RTO and RPO that I spoke about. Okay, so OpenText का availability. So if you all remember, double take करके एक organization था. I was about to say, yeah, it's double tech, right? Which is I think 30+ year old technology. So double take was acquired by OpenText, right, few years back, and then जो भी double take का Microsoft ने Azure में जब initial किया था तो Azure का workload भी उन्होंने ये double tech से ही migrate किया था, right? So before they come up with their own tool, so double tech is proven. I think it is. Even data centers in India or outside, including Yota, Control S, while Wipro, all this do migration, they use double tech. Yeah. सब लोग वही use करते हैं. Yes. And I think physical to physical, they have a unique product. So there are very few products in market for a physical to physical replication, which double tech is. So double tech, yes, proven stuff. Yes. It is. It is a proven stuff. Right. Yeah. We see another thing that these guys had an issue with was their failback plan. Right. That if my server fails or if my source fails, what happens? So RTO and like I said, RTO and RPO is sub-zero. Right. The only time it takes is the server restart time. As soon as my source server is restarted, up and running, I am up and running. Okay. So people won't even feel the difference. And then needless to say that kind of translates into automated disaster recovery. All right. Jahan pe users won't even figure out, they won't even feel, right, that something has gone wrong. So you are always connected. Yeah. Sorry. Yeah. Yeah. And then again, I mean, like I said, so that way your business is always continued. It is always connected. Okay. And then it never
really kind of fluctuates or goes down. So that was the overall scenario. That's how we really helped this specific customer come out with, a more robust, okay, and something which is also compliant, right, solution. So while I was getting excited, sorry, I was Ah, interrupting last from my angle, that sure, yeah. while we say this kind of requirement, and many of the SIs who are possibly experts when it comes to the networks or possibly even backup and all is that way easy technology. But while we say the data center and application, that Mhm. is the heart for any customer. And Yes, while a partner, there are very handful of partner who has the yes. expertise across the data center layer, right? Because we are playing up with the application. And so do, for example, any partner gets the requirement today and they Uh-huh, don't have the expertise. Do uh-huh. OpenText provide professional services from a consulting angle that how this will happen? And even at the implementation layer, so can for a partner they work just like a mediator between a customer and OpenText cybersecurity, and they want someone to own it up such kind of critical project, because Mhm. migration or the availability is not that way that easy when it comes to the implementation and support. So do you or OpenText Cybersecurity has a professional services for implementation and maintenance? That's the query. That's a brilliant question, right? In fact, we even with this specific customer, he had the same ask, right? क्योंकि Hmm. हाँ संकेत ये मैं करूँ तो सही लेकिन मैं करूँ कैसे मुझे नहीं Hmm. पता. All right. So that is where, even before going to OpenText, Goima's professional services comes into the picture, right? So Hmm. I have the capability, I have the skill set, okay, in-house within my team, all right, which can help me with, migration projects or even with all the availability projects, right? Awesome. And plus, OpenText has their professional services as well, right? Yeah. That is also something that all the partners and customers can definitely Yeah. make use Because of. a large BFSI will always want a OEM to be Absolutely. involved from a perspective of consulting and implementation. OpenText has their professional So service that that can that help you with. professional service can again yeah, Absolutely. awesome, awesome. Absolutely. That They that do have their service, and then that definitely comes into the picture. perfect. Great, great, awesome. That's nice. I think Sanket, a very unique stuff. So last time we discussed a backup with Mhm. this availability and migration. Awesome area and double tech is, I mean, we've proven solution on that. A lot of OEM, including VMware, Nutanix, HP, IBM, they promote this solution. So Absolutely. fantastic solution on those area.